Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta, and so this video is going to be a bit personal. A lot of you keep on asking me what was my schedule like in 11th and 12th, whether I did coaching or not, and how I managed subjects, whether I cleared my AIIMS examination back in 2012 in the first attempt, second attempt, whatever it is. And but I watched this video towards the end. Bit of a personal story, but hopefully it will inspire you. Hopefully it will motivate you. So I'll start with 11th. So I had joined coaching. You can actually go online and see which coaching I had joined. I don't want to name it because I think that coaching has gone really haywire right now. But having said that, yes, I had joined coaching. I used to go to school. I used to regularly go to school every day. I started from Air Force Golden Jubilee Institute in Subrata Park in Delhi. And I used to regularly go to school, and on Saturday, Sunday, I used to attend my coaching. During my time, 11th May, the exam used, instead of being of 720 marks, used to be 800. And हमारे time पे, because the exam used to be a bit tougher as compared to right now, it was considered well that if you're scoring more than 600, you probably will get selected. But let me be very clear. I knew that I was decently intelligent. Yes, I was intelligent. There's no doubt about that. But I never used to score more than 500 or 550. I mean, कुछ भी कर लेता था, no matter amount of how much hard work I used to think, or decent amount of hard work that I used to put in. I used to think that मेरे result उतने अच्छे नहीं आते थे. I used to never be extremely good in physics. मेरे physics was, मतलब, it was not too weak, but it was not excellent. I used to get around 110, 120. Around 50 to 60%. कभी कभी उससे भी कम आते थे. There was a time when I got even 80 at that time. My bio was amazing. Every time my bio was amazing, and still मेरी bio अच्छी थी, and I still never used to score more than 75%, 115 biology out of 200. And I thought that the reason I was never sincere actually. And what changed? In 12th, 11th, I used to study, but I was never studying too much. I was studying okay. I used to come home, I used to study for 4-5 hours. But that's about it. 4 hours, maybe 5 hours on the higher side. छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, but that's about it. बहुत नहीं पढ़ता था. The thing was, I was not actually entirely focused. I was not focused on my goal. My goal was there. I was studying towards it, but it was not the only thing occupying my mind. It, in a very cheesy manner, अगर अर्जुन को बर्ड की आंख दिखी थी, मेरे को पूरी बर्ड दिखती थी उस समय. मैं सिर्फ उस आंख के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट फोकस्ड. दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वॉज डूइंग. सो व्हाट हैपेंड इन 12th standard, there was one thing that happened. I used to like a girl. I mean, a lot of us, 15 and 16 years, it's normal to like a girl. And that girl started dating a really good friend of mine. Obviously, I was heartbroken. There's no doubt about that. And along this time, this 12th standard ki beginning ki baat hai, and at the same point of time, I just realized that my Mausi also wanted to become a doctor. I did not know about this actually. And she one day called me up and she said कि मेरा भी बहुत मन था, but she couldn't because उस समय coaching नहीं होती थी. And yeah, she couldn't clear her examinations at that point of time, and she was sort of pinning my hopes on me, and she cried during that call, if I'm not wrong. And this sort of got me emotional. I'm not going to deny that. And at the same point of time, my father got posted out, so I was just alone with me and my mother, preparing in 12th to get an entrance, clear the NEET. Also, my NEET नहीं था, AIIMT, and whatever it is. And all these things happened in conjunction, almost one after another. And what happened? I changed my gears. I became focused. I decided that after that, मेरी ज़िंदगी का हर एक क्षण, from that very moment, I decided every waking moment of my life, everything that I'm going to from doing that point is going to be that singular goal, singular focus, and singular thing that I have to crack, that I have to clear the AIIMT in the very first time. कोई second first drop नहीं, कोई दो second drop नहीं, कोई कुछ नहीं. I have to. This thing went out of my mind कि हाँ मैं drop ले सकता हूँ, and then I can easily clear it because there were 2-3 people I knew, all of them had taken one drop at least. I was sort of comfortable with it, and I decided that no, I have to clear it this time. I have to clear it now. I am capable enough. I'll put everything that is possible inside me to get that. I changed my gears. So initially when I used to study for just 4 to 5 hours, like I said, मैं हर समय पढ़ने लग गया. मैं स्कूल बस में बैठता था तो मैं पढ़ता था. मैं स्कूल की असेंबली बंक करके पढ़ता था. मैं स्कूल में ब्रेक में पढ़ता था. मैं स्कूल के लेक्चर्स में, इंग्लिश लेक्चर्स के टाइम पे पीछे बैठ के पढ़ता था, लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ता था. एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंड ट्राइंग टू स्टडी एंड ट्राइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन. At the same point of time, there were certain things that also came back. But don't want to say this, but yes, अगर मैं टॉयलेट भी जाता था तो मैं पढ़ता था.
एंड आफ्टर दैट लाइक आई सेट कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, मैं नॉर्मली 4 to 5 hours पढ़ता था, बट आई इंक्रीज दैट मिनिमम 7 hours में पढ़ने लग गया. अलॉन्ग विद दैट जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं पढ़ता था. देयर वॉज नथिंग इन माई माइंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैव टू क्लियर NEET. At that point of time, AIIMT, I have to clear my pre-medical examination. Nothing, absolutely nothing. I was so focused that अगर मैं ब्रश करते समय, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, अगर मैं ब्रश करते समय मेरे को लगता था कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ ब्रश करने में, तो मेरे को लगता था आई एम वेस्टिंग माई टाइम. अगर मेरे को लगता था कि आई एम इन द टॉयलेट फॉर टू लॉन्ग, आई यूज्ड टू थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम. इफ आई यूज्ड टू थिंक दैट अगर मैं 10-15 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, उस ब्रेक में आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं वो 15 मिनट की ब्रेक है वो 20 मिनट की ना बने, वो 16 मिनट की ना बने. ओके अगर मैंने कहा मैं खुद को कि मेरे को ब्रेक लेनी है, मैं एक गाना सुन रहा हूँ, तो आई मेड श्योर कि मैं एक गाना सुनूंगा, मैं 2 गाने नहीं सुनूंगा, मैं 3 गाने नहीं सुनूंगा. एंड दैट्स हाउ फोकस्ड आई बिकेम. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज वन मेजर मिस्टेक आई वॉज डूइंग कि इट्स नॉट लाइक आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, समथिंग लाइक दैट. आई इम्प्रूव्ड इट, आई सॉल्व न्यूमेरिकल्स, नहीं हुआ, गलत निकला, सॉ द एक्सप्लेनेशन, फिर से सॉल्व किया, उसके जैसा एक और सॉल्व किया, दूसरे टाइप के सॉल्व किए, just kept on solving numericals. एक पॉइंट के बाद you just almost always end up getting the concept, चाहे तुम्हें कोई टीचर समझाए या ना समझाए. By keep on solving, keep on learning from your mistakes, you end up learning those. I kept on solving MCQs, I have told you this multiple times. बहुत MCQs बहुत MCQs solve किए, and I became amazingly good at MCQs. One more important thing, I realized the importance of NCERT at that point of time. A lot of people which still don't know. I started giving a fuck you to all my coaching tests, frankly, after a point of time. अगर NCERT से नहीं आ रहा था, I did not consider that test की rank valid. And actually, that's how coaching actually fools you. 12th में वो actually में NCERT से देने लग गए थे, and 11th standard में वो NCERT से नहीं देते थे. So मेरी रैंक्स इंप्रूव करने लगी कोचिंग में. आई यूज्ड टू गेट लाइक 20-30th रैंक आती थी मेरे अपने कोचिंग टेस्ट में. आई यूज्ड टू स्टार्टेड टॉपिंग ऑल ऑफ देम एक्चुअली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई यूज्ड टू टारगेट 600-800. मेरे को लगता था 600-800 लाता हूँ तो मेरे 500 आते हैं. आई वाज लाइक मैं 700 से नीचे नहीं लेकर आऊँगा. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग 700 मार्क्स आउट ऑफ 800. I basically, like you said, if you have to be extraordinary, if you have to crack this entrance, you have to be extraordinary. I started putting that extra in my efforts. I started being that extra. I started practicing with those extra MCQs. I started working extra hard. I started doing extra, numericals and, extra study. Everything I found, मेरे को लगता था कि मेरे को जहाँ पे मौका मिलेगा मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा. And I did that, I was amazingly good at quizzes. मेरे को quizzing बहुत पसंद है. I still love to quiz. I mean general quizzing की बात कर रहा हूँ. मैं 11th standard में जब भी कोई स्कूल का क्विज होता था मैं चला जाता था. I stopped going. I was like it's a waste of time because एक दिन पहले तो थोड़ा बहुत तो क्विज के लिए पढ़ना पड़ता है. No, not at all. किसी क्विज में नहीं गया एक्सेप्ट 2 quizzes because I realized कि ठीक है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एम्स में जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आई कुड से कि मैं 2 क्विज में चला जाऊँगा, 2 या शायद 3 मैक्सिमम, बट दैट्स अबाउट इट. नहीं तो ऐसा होता था हर दूसरे या तीसरे हफ्ते में क्विज में जा रहा होता था. स्टॉप्ड. I used to love to play badminton. I stopped going to badminton. For two consecutive years, I did not go out to eat, to have, go out for a movie. My entire life, especially in the 12th standard, was just focused on the singular goal कि मुझको एक एग्ज़ाम निकालना है. That's how you crack. You cannot crack with multiple things at your time in your mind. You need to give 100% that is possible in you for the next 2 years. For the next 1.5 year. It requires that effort. It requires that dedication. A lot of people will be like, sir 6 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा. No, नहीं होगा. Who the hell what do you think NEET is? किसी हालत में 6 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला यार तुम्हारा. तुम्हें क्या लग रहा है जो 2 लोग 2 साल से 1 साल ड्रॉप करके 2 साल से ड्रॉप करके वो लोग बेवकूफ़ बैठे हैं वहाँ पे जो एग्जाम निकालने में लगे हुए हैं. किसी का एग्जाम 3 महीने या 6 महीने में नहीं निकलता. I'll be very clear about that. मैं भी 11th में पढ़ता था. It was not like मैं 11th में पढ़ता नहीं था. 12th में I just changed my gears from like second या third to suddenly be like मैं 5th gear में आके I will I'll be a fucking F1 driver if that requires me to be. But yeah, that's all about it. For one entire year I did nothing except my goal of clearing entrance, and you should too. And what was the result? I got all India rank 6 in AIIMT. I ranked 5th in Jipmer, and I got ranked 10 in AIIMS. My worst rank was ranked 10 in AIIMS, by the way. So, and I was, towards the end, I was so confident that I didn't give
any entrance test except for these. I didn't give Manipal, I didn't give IPU, I didn't give Rajasthan PMT, I was eligible for that. I didn't give Punjab PMT, I was eligible for that. I didn't give AMU, I didn't give BHU, I didn't give AFMC, I didn't give Wardha, I didn't give CMC. हमारे टाइम में बहुत सारे एग्जाम होते थे, आई एग्री, बट लोग सब एग्जाम देते थे, मैंने कुछ नहीं दिए थे. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स दी एंड कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, मैंने एक साल बैठ के अच्छे से मेहनत की, मेरे को सारे एमसीक्यूज रटे पड़े हैं, मेरे को सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता. एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली बी पॉसिबल अगर तुम अपनी 100% डेडिकेशन दो. इट वोंट बी पॉसिबल इफ़ यू नो कीप ऑन लॉइटरिंग टाइम कि आज चल एक दिन मैं मज़े मार लेता हूँ. नहीं, ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है, येस डेफिनेटली, बट ब्रेक्स के ऊपर भी ब्रेक होनी चाहिए. 10 मिनट की ब्रेक है तो 10 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए, 11 मिनट नहीं होने चाहिए. ठीक है, अगर एक टॉयलेट जा रहे हो तो 5 मिनट में वापस आओ, क्यों टाइम वेस्ट करना है. अगर टीवी देखना है आधे घंटे के लिए एक एपिसोड देखना तो एक एपिसोड देखना है, 2 क्यों देखना है, दूसरे एपिसोड का 1 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों देखना है ना. अगर ये चीज़ तुम अपने में नहीं लेकर आ पाओगे तो यू वोंट एवर क्लियर दिस एग्जामिनेशन. आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट. ओके, दिस एग्जामिनेशन, ये 11th and 12th तपस्या होती है, एंड वो तपस्या तुम्हें करनी पड़ेगी. 1 साल 2 साल जितने साल तुम्हें करने हैं, तुम जब करने शुरू कर दोगे तुम्हारे एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर होना लग जाएगा. तुम्हें तपस्या करनी होगी, एमसीक्यूज करने होंगे, तुम्हें करने होंगे न्यूमेरिकल्स. मुझसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, बहुत टफ लगती है, भाड़ में जाए क्या, तो एग्जाम को फर्क पड़ रहा है कि तुम्हें फिजिक्स टफ लगती है. सॉल्व दो फकिंग एमसीक्यूज, सॉल्व दो फकिंग न्यूमेरिकल्स, सॉल्व देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं जाए. ठीक है, so no excuses acceptable. You have to put in 100% of your efforts. Only then you will get what you want. If you want to become a doctor, this is what you have to do. This is what you have to go through. ये तपस्या है ना, करनी पड़ेगी. एंड मेरे को ये समझने के लिए मेरा दिल टूटना पड़ा, मेरी मौसी को रोना पड़ा. It's possible that you can do it with just this video. I hope you can. But yeah. Hopefully I'm able to inspire even one person out of this, anyone who's watching this video. Then I'm great. Stop watching this video and go and fucking study. Thank you and have a nice day.